Well, if you insist. What music is that I hear? Something to try and make you feel at home. Imposed one over the other, so that figures will pass and repass each other in photographic action. Thousands of exposures become necessary to complete the entire motion picture. The production of film beginning with one sustained picture, note how this series of pictures flash down the screen up to the rate of 24 per second speeds the action. The eye retains the image of one. When the picture opens at the famed Carthay Circle Theater, every star and executive in the movie colony turns out to pay tribute to the genius of Walt Disney. Leo Spitz, president of RKO Radio Pictures, Mickey and Minnie Mouse, and Donald Duck, Bob Burns and the Seven Dwarfs, Shirley Temple. Next day, newspaper and magazine critics rave about Snow White and the Seven Dwarfs. They love its new and amazing character. They remember its music, its 8 big new song hits. They laugh uproariously at the most amusing characters Walt Disney has ever created. Ready, our stars stepped into place. To make each of these cartoons took up to 6 months and cost over $20,000. Quick version, rough version of a walk. First, you construct the figure, lay out the main poses, space out those poses, do the in-betweens, and adjust as necessary. So I hope this helped you. And intensive. Like building your own puppet and changing it frame by frame as it goes across the screen can take a lot of time, even more than the other animation mediums. The skill level required to do spacing in your head and then just kind of shoot the pictures and have it be focuses on more interesting shapes and text instead of story and character, usually. So usually you're moving motion graphics elements around like titles or logos in just an appealing way. Typically most of the work is in commercials, marketing, advertising, and doing movie intros and credits. The fun part is that this takes the pressure off. The animation doesn't require Disney is what first comes to mind, right? Or maybe Looney Tunes. So, it's one of those. It used in traditional animation,
Everything is hand-drawn by page on real paper. How many drawings would you do? If you were, animating on a feature film, there would typically be 24 frames or pictures a second, so 24 FPS. This means that you would have to create 24 drawings for every second of film time. It's otherwise known as animating on one. Every 2 frames, they would just have one drawing. And this usually works for especially a lot of the slow action. Occasionally on super fast actions, you still need ones and you use interchangeably. Smear frames, you're talking about extreme squash and stretch, just making a really exaggerated animation is all at your fingertips. You're hand drawing all the animation, but you're drawing digitally with software. The style is instantly different, but often more simplified than pencil and paper. In recent years, with the growth of YouTube and social media, this kind of animation has become really popular. The main advantage of the unique difference with this medium is that you're manipulating 3D virtual puppets called character rigs to create an animation. It's kind of similar to stop motion in that sense because you're using a puppet, but it's all digital on the computer, so you're kind of and these 3D puppets called character rigs are both the advantage and the disadvantage of this medium. So the main is manipulating this guy around that's already been made, and it's not gonna suddenly break shape unless you do something really wrong. Different heads all in one frame, that can be hard to put that over and to put his hand on top of his head. Sometimes their arms are too short or they can't take the hat off or whatever it is. Animate, or the only one that will survive, but बचाओ भैया कोई बचाओ यार दोनों को बंद कर छोड़ो मुझे नहीं स्वीटो My name is Uzair Zahir Khan and I am the writer, producer and director of Alayar and Legend of Markhor. मेरा पेशा है ऑब्वियसली, और सीजी के अंदर जो सबसे चैलेंजिंग चीज़ होती है या जो चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है और इम्पैक्ट भी होता है, वो फिल्म होती है, एनिमेटेड फिल्म। तो आई थिंक ज़्यादातर सीजी आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी ड्रीम होती है कि इन्हें, तो पाकिस्तान में ऐसा इतनी सीजी नहीं होती। सो मेरी भी थी ड्रीम, आई वांटेड टू मेक animated films because I feel कि it's important for Pakistanis, especially Pakistani children, कि उनको कंटेंट मिले ऐसा जिस जो उर्दू में हो, क्योंकि बेतहाशा बच्चे जो हैं वो अंग्रेज़ी उस तरह से नहीं समझते, ना ही इंजॉय करते हैं। My name is Mohammad Usman Iqbal and I am head of production at Third World Studios. Recently we produced Alayar and the Legend of Markhor. बचपन से ड्राइंग का शौक़, और वो जब देखते हैं ना इर्द गिर्द कि सीजी में काम हो रहा है और वो इंस्पिरेशनल होता है तो आप उस तरफ खुद थोड़े से पुश होते हैं। जैसे स्क्रिप्ट से शुरू होता है, हर चीज़ ज़ाहिर है स्टोरी होगी तो वहाँ से मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपके लिए। वहाँ से भी कॉन्सेप्ट, स्केचेस, स्टोरी बोर्ड्स, फिर उसके एनिमेटिक्स, फिर एनिमेशन, एनवायरनमेंट डिज़ाइन, एनवायरनमेंट का अलग कॉन्सेप्ट बन रहे होते हैं, कैरेक्टर्स के अलग बन रहे होते हैं, फिर उनकी मॉडलिंग होती है 3D में। मॉडलिंग के बाद रिग होते हैं, वो बोन्स और स्केलेटन बिठाया जाता है। उसके बाद वो एनिमेटर्स के पास चला जाता है, एनिमेटर्स उसकी पूरी एनिमेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। तो वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग होती है, स्क्रिप्ट जब वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हैं वो वॉइस एक्टर मजाक कर रहा था यार। फिर उसके बाद जब एनिमेशन हो जाती है तो वो लाइटिंग के पास आ जाता है, लाइटिंग वाले जो हैं उसको लाइट करके रेंडर आउट कर रहे थे, पोस्ट प्रोडक्शन के पास चला जाता है जो उसके ऊपर फाइनल इफेक्ट्स डाल रहे होते हैं।
मैं कहीं काम करता था, वहाँ पे मुझे सिगरेट की जो पैकेट्स होते थे, तो वहाँ से मैं इंस्पायर्ड हुआ कि जहाँ पे उसकी ग्राफिक्स बने होते थे, डिज़ाइंस बने होते थे, तो ये किस तरह बनते हैं, कौन बनाता है इनको। तो उस जनरल स्टोर में जो कुछ भी था वो सारा कुछ ही ग्राफिक्स के ऊपर था, मतलब डिज़ाइन होते थे सब कुछ। तो वहाँ से इंस्पायर्ड होता हुआ मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र तय करता हुआ, तो फिर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बना। फिर ग्राफिक डिज़ाइनर से फिर मैं 2D एनिमेशन में आया। 2D के बाद फिर मैं 3D एनिमेशन में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे एनिमेशन के इंस्टीट्यूट्स बहुत कम है और जो है तो वो काफ़ी महंगे। उस वजह से यहाँ पे एनिमेशन को इतना ज़्यादा फ़रोग़ नहीं मिल रहा। अगर इसी तरह जिस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अभी ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एनिमेशन को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता अगर आप ग्रूम करें तो मेरा नहीं ख्याल कि एनिमेशन का पाकिस्तान को मुकाबला कर सकेगा। अल्लाह यार एंड मार्को और डंकी राजा, डंकी टीम जो है, तो इस वजह से हमारी जो अवाम है पाकिस्तान की, उसके अंदर काफ़ी एक शऊर सा आया है। उससे पहले एक कमांडर सेफगार्ड आया था, फिर मिल्कटियर आया, उसके बाद तीन बहादुर आए, उसके बाद बुरका वेंजर आया, उसके बाद आप द लेजेंड ऑफ मार्को है। उसको देख के आपके माइंड में क्या ख्याल आ रहा था? काश मैं भी ऐसा कर सकता, या मैंने भी ऐसा किया, मैं भी इसका पार्ट होता। एक चीज़ इतनी फेमस हो रही है, तो मेरे ख्याल में कि हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए इस मामले में। एनिमेशन जो है पाकिस्तान में काफ़ी कम है। उसको हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी। इंशाल्लाह के एक दिन आप एक अच्छे एनिमेटर के तौर पे सामने आ सकते हैं। So this idea came from the fact that I had never really seen glass blowing in animated form. And that's when the idea started coming around that maybe we can have a story based around this. So the story revolves around two children whose main experiences interacting with each other are based in this glass shop, and all the memories and their friendship that develops happens there. So it initially started off as a short film, and then gradually like he just kept adding on things and drawing more storyboards. He said, no, I think it needs to be 60 minutes. Okay, no, I think it needs to be like a proper full-length 80-minute film. Like it just started becoming bigger and bigger. You know, people take that for granted. Like every second of this film has so much thought and effort and time put into it simply because we had nothing before this. There's a saying that I really like, which is you blossom or bloom where you're planted. It's our responsibility to make the industry here and to make it better. We hope to make beautiful hand-drawn animation and show the world that we can contribute to this field too, and our animation can hopefully be up there with the greats one day, inshallah.